अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं अपनी वैगनआर का ऑयल चेंज करवाने जा रहा था, तो सोचा कि आपके लिए वीडियो बना लेता हूँ। तो बुनियादी तौर पर मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि इसकी ट्यूनिंग में क्या क्या होता है और इसका कितना खर्चा है, इसका ऑयल कितने का आया और सारे फ़िल्टर वगैरह कितने के आए हैं। तो चलिए चलते हैं वर्कशॉप और ऑयल चेंज करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद के रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। Chasing you, baby. Don't you know it's true? I'm not like the other girls, baby. Don't get it confused. You gotta work to call me your own. Ain't no doubt about it. Don't call me up when you feel alone, 'cause I can't do without it. Tell me what's the move? I can't do this anymore. Need something new. Show me that you want me to. Oh, I'm starting to get bored. Slow in motion, I need more. I'm not your ordinary girl, no. I'm not your ordinary girl, no. 'Cause I know you love the attention, but you know, I'm on a mission. Yeah, I know, you love the attention, but I don't do second guessing, yeah. You gotta work to call me your own. Ain't no doubt about it. Don't call me up when you feel alone, 'cause I can do without it, yeah. Tell me what's the move? I can't do this anymore. Need something new. तो जी ऑयल वगैरह चेंज हो गया था। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट की। तो मुझे ऑयल पड़ा है 3000 का, जो कि सुजुकी जेन्युइन रिकमेंड करती है, वो मैंने डाला है। और उसका जो एयर फिल्टर है वो 450 का आया है और ऑयल फिल्टर जो है वो 250 का आया है। और एक मैंने और इसका काम किया है, वो ये है कि दूसरे गियर में ये काफ़ी ज़्यादा लैग करती है। जिनके पास वैगनआर है वो इस मसले को जानते होंगे कि दूसरे गियर में गाड़ी बैठ जाती है। तो इसका हल ये है कि आप कार्बोरेटर स्प्रे मिलती है एक बाज़ार से, वो ले लें और इसके आप कार्बोरेटर में वो मारें, तो उसके साथ काफ़ी हद तक मसला हल हो जाता है। तकरीबन आपका 70% मसला उससे हल हो जाता है। तो अगर आपके पास भी वैगनआर है और उसमें यही मसला है, तो आप ये हल निकाल सकते हैं उसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई और सवाल है वैगनआर के मुताल्लिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।